அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு மொத்தம் 4 ஸ்டேஜ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபெட்சு, 2வது டீகோடு, 3வது மெமரி ரீடு, 4வது எக்ஸிக்யூட்டு. இப்போ ஃபெட்ச் அப்படின்னா என்னென்னா, மைக்ரோ ப்ராசஸர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கெட் பண்ணி அது ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அடுத்தது டீகோட் அப்படின்னா, அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை டீகோட் பண்ணி நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட்டோ இல்லை டிக்ரிமெண்ட்டோ பண்ணி வச்சுக்கோம். அடுத்தது மெமரி ரீடு. மெமரி ரீடு அப்படின்னா, இங்கே டீகோட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ரீட் பண்ணி இந்த மெமரி ரீடில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அடுத்தது எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னா, இந்த மெமரி ரீடில் உள்ளதை அடுத்தது ரைட் பண்ணி கடைசியாக அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடியும். இப்போ ஆரம்பத்தில் உள்ள மைக்ரோ ப்ராசஸர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபெட்சு, டீகோடு, மெமரி ரீடு, எக்ஸிக்யூட்டு இது 4ஐயும் பண்ணி முடிச்சிரும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு. அப்புறம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வந்துடும். அடுத்தது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபெட்சு, டீகோடு, மெமரி ரீடு, எக்ஸிக்யூட் இதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 4 ஸ்டேஜையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நமக்கு டைம் அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகுதுங்கிறதுனால இந்த பைப் லைனிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு போகிறாங்க. இந்த பைப் லைனிங்கை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 2 கம்பெனிஸ் எடுத்துப்போம். ஒரு கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கர் தான் இருக்கார், இன்னொரு கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு உள்ள கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஒருத்தர் மட்டும்தான் செய்யணும். அதனால் டைம் வந்து நமக்கு ரொம்பவே அதிகமாகும். இப்போ இந்த 2வது உள்ள கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து டைம் ரொம்பவே சேவ் ஆகும். இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ள கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து 100% ஒர்க் பண்ணணும். அதே மாதிரி டைமும் அதிகமாகவும் இவரோட சீக்கிரமாக டயர்டாயிடுவார். அதே மாதிரி இப்போ 2வது உள்ள கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து 25% ஆஃப் ஒர்க்கு பண்ணால் போதும், அவங்களுக்குள்ளே மற்ற ஒர்க்கும் ஷேர் ஆயிரும், டைமும் சேவ் ஆயிரும், அதே மாதிரி எஃபிஷியன்சியும் அதிகமாக இருக்கும். இந்த கான்செப்ட் படி தான் நமக்கு பைப் லைனிங்கிறது ஒர்க் ஆகுது. இப்போ பைப் லைனிங் பற்றி பார்ப்போம். பைப் லைனிங்கில் நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெட்சிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெட்சிங்கிற ஸ்டேஜை முடித்ததும் இது டீகோடுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். இப்போ சைமல்டேனியஸாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2 அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2 வந்து ஃபெட்சிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். எப்போ அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1 டீகோடில் இருக்குது, இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2 ஃபெட்சில் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெமரி ரீடுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா 2வது கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். ஆனால் 3வது கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெட்சிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சுன்னா 2வது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைமல்டேனியஸாக மெமரி ரீடுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். 3வது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். 4வது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெட்சிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். இதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் அந்தந்த டயத்துக்கு சைமல்டேனியஸாக நடக்கிறதுனால நமக்கு ப்ராசஸிங் டைம் வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதோட எஃபிஷியன்சி, ஸ்பீடு எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். இந்த பைப் லைனிங் கான்செப்ட் வந்து எந்தெந்த ப்ராசஸர்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த டிஎம்எஸ் 320 C200, டிஎம்எஸ் 320 C3X, டிஎம்எஸ் 320 C5X இது எல்லாமே டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸர்ஸ். இந்த மாதிரி ப்ராசஸர்ஸ் எல்லாமே இந்த பைப் லைனிங் கான்செப்ட் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த பைப் லைனிங் கான்செப்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்களோட சந்தேகங்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Hi everyone, this is Atik. I welcome all of you to my YouTube channel Engineering Drive. My dear students, in my last video I have started the concept of pipelining to all of you. I have discussed what is a pipelining, why our computer makes use of the pipelining concept. The main reason the pipelining is used is to enhance the performance of our computer. Now, even though pipelining has a lot of advantages, there are some problems that can come when our computer makes use of pipelining concept. So what are the problems that our pipelining introduced? Each and everything I am going to discuss in my today's video. So one of the big problem that can be happened in a pipeline is a data hazard. So today I am going to discuss about the data hazard topic. Okay, what is a data hazard? What type of problem can come in a pipeline with the help of data hazard? And with the help of this diagram I am going to explain you how this data hazard can occur in our pipeline. Okay. So what is a data hazard? First of all, what type of problem can occur in a pipeline? Let us see the definition first. A data hazard is a situation in which the pipeline is stalled because the data to be operated on are delayed for some reason.
as shown below. My dear students, what is the data hazard actually? It is a situation in which the pipeline is stalled. This is very, very important point here, which means the normal function of a pipeline is the output of instruction 1 will be passed to instruction 2. Instruction 2's output will be passed to instruction 3 and so on. Yes or no? If your pipeline is not working properly, if it is getting stopped due to some unwanted problem, then this situation is nothing but data hazard. So with the introduction of data hazard, our pipeline will get stopped or it will stall. So what causes our pipeline to get stalled? We will see with this example now. Okay, my dear students, let us consider these are nothing but your cycles from 1, 2 and so on up to 9 in the increasing order, and this is instruction 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 instructions we have taken in this example now. Okay. Now, in instruction 1, these are the steps we have taken here for the clarity. Jump stands for fetch the instruction, decode the instruction, execute the instruction, and write the instruction. Okay. F1, D1, E1, W1. So this is about instruction 1, instruction 2, instruction 3, 4, 5. So this is not a normal working of a pipeline because in instruction 1, for the execution of instruction 1, these are the 4 steps. F1, D1, E1, W1. One stands for these are all the steps related to instruction 1. When the execution of this complete instruction will take place at the end of 4th clock cycle, you can see here. Here, the complete execution of this instruction 1 will take place. When the decoding of the first instruction will proceed, during that step only, the fetching of the second instruction will start. You can see here, F2. So D2 also okay. But you can see here in the execution of instruction 2, there is a delay which has happened here, which means actually this E2 must be completed at the end of 4th cycle itself here. Okay, but what happened? Due to some problem, the execution of the second instruction got delayed. Up to how long it got delayed? We can see here, it got delayed from 4 to 7 clock cycle. So which means at the end of the 6th clock cycle, E2 got executed. Now, after that, the writing of the second instruction will take place. Now, what happened? If the second instruction, if the execution of the second instruction got delayed, automatically it will affect the third instruction also. You can see here. Because of the delay of execution of second instruction, the execution of third instruction will also got delayed here. Why the execution of third instruction got delayed? Because still our step D3 has not completed here. When D3 will complete, then E2 will complete. Similarly, when D4 step will complete, then our D3 step is going to be completed. Which means all of you can get one clear idea that second instruction depends on first instruction, third instruction depends on the execution of second instruction, fourth instruction depends on the execution of third instruction, fifth instruction depends on the execution of fourth instruction. If in any instruction, if one of the step got delayed, then automatically it will affect the execution of the remaining instructions. So this is known as data hazard example. A data hazard is a situation in which the pipeline is stalled. You can see here the pipeline got stalled. Why the pipeline is stalled? Because the data to be operated are delayed. Here we are seeing the delay. Actually, the E2 must be executed at the end of 4th cycle only, but when the E2 will complete its execution at the end of 6th cycle, so there is a delay of 2 cycles in this one. So this because of this delay, pipeline will get stalled. Okay, now we will take one more example now to understand this concept of pipeline, my dear students. Now, one more definition of the pipeline is a data hazard is any condition in which either the source or the destination operands of an instruction are not available at the time of expected in the pipeline. Now, I will take one more example now. Consider a program that contains 2 instructions, I1 and I2. Let us say these are the 2 instructions. When the program is executed in a pipeline, the execution of I2 can begin before the execution of I1 is completed. Actual procedure of pipeline is it will start the execution of I2 before I1 is going to complete. Yes or no? Now, which means I2 is dependent on the instruction I1. Okay, now we will see with one example now. Let us take the value of A as 5. Now let us take 2 instructions. This is first instruction and in any instruction. Now, one more definition of the pipeline is a data hazard is any condition in which either the source or the destination operands of an instruction are not available at the time of expected in the pipeline. Now, I will take one more example now. Consider a program that contains 2 instructions, I1 and I2. Let us say these are the 2 instructions. When the program is executed in a pipeline, the execution I1 यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को हमने यहाँ पे फेच किया, मतलब इस क्लॉक पल्स में हमने उसको फेच किया। हजार्ड मतलब प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हजार्ड्स पाइपलाइनिंग के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि सबसे फ्रीक्वेंटली आज जो टॉपिक है वो हजार्ड्स है पाइपलाइनिंग के अंदर, और यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग होते क्या है? हजार्ड मतलब प्रॉब्लम इन पाइपलाइनिंग का फंडा क्या है कि हम पाइपलाइनिंग में हमेशा बात करते हैं कि सीपीआई जो है वो 1 होना चाहिए, मतलब क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन कितनी होनी चाहिए? 1। यानी एवरी क्लॉक में, हर एक क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन मेरी बाहर आनी चाहिए एज ए आउटपुट। लेकिन ये इसको अचीव करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और इसको अचीव करने में हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं हम हजार्ड्स। तो बेसिकली डेटा हजार्ड है, स्ट्रक्चरल हजार्ड्स है और कंट्रोल हजार्ड्स है। इन तीनों हजार्ड की वजह से क्या होता है? डिले अकर होता है, और डिले की वजह से क्या होता है? हमारा सीपीआई 1 नहीं आता, और उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हमारा जो एम है कि हर एक क्लॉक पल्स में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की कैसे हम इन हजार्ड्स को रिमूव कर सके, कैसे इनको दूर कर सके, लेकिन वो फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करें। तो यहाँ पे डेटा हजार्ड की अगर बात करें, इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट, जिसको बोलते हैं ट्रू डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी एंड आउटपुट डिपेंडेंसी। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल हजार्ड एंड कंट्रोल हजार्ड। तो सबसे पहले हमारा जो एम है कि हर एक क्लॉक पल्स में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की कैसे हम इन हजार्ड्स को रिमूव कर सके, कैसे इनको दूर कर सके, लेकिन वो फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करें। तो यहाँ पे डेटा हजार्ड की अगर बात करें, इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट, जिसको बोलते हैं ट्रू डिपेंडेंसी
एंटी डिपेंडेंसी एंड आउटपुट डिपेंडेंसी, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल हजार्ड एंड कंट्रोल हजार्ड। तो सबसे पहले मैं डेटा हजार्ड के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो डेटा हजार्ड में हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं रीड आफ्टर राइट का। लेट्स से कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, मतलब R2 और R3 का जो एडिशन है वो कहां पे सेव हो रहा है, R2 में जाके सेव हो रहा है, और यहां पे मैं R2 को यूज कर रहा हूं और उसको मैंने ऐड किया R4 से, और फाइनली रिजल्ट जो है R5 में। सिंपली हमने क्या लिखा है कि R2 और R3 रजिस्टर में जो डेटा पड़ा उसको मैंने ऐड करके R2 में डाला, और यहां पे मैं R2 को क्या कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं रीड आफ्टर राइट, मतलब यहां पे हम रीड कर रहे हैं R2 को और यहां पे हम R2 को राइट कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन 1 के बाद इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो उसको रीड कर रही है, किसको, R2 की वैल्यू को। तो यहां पे डेटा हजार्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। कैसे, ये देखो हमारे पास जनरली जो पाइपलाइनिंग है वो हम 4 स्टेज 5 स्टेज पाइपलाइनिंग लेते हैं, वो आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो बेसिक कांसेप्ट डिस्कस करना है, कई बार आपको 4 पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, 5 का आ सकता है। तो यहां पे हम बात करें, लेट्स से हमारे पास 5 स्टेज पाइपलाइनिंग है। तो 5 स्टेज में पहली इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड, दूसरी है लेट्स से हमारे पास ऑपरेंड फेच, तीसरी स्टेज है एग्जीक्यूट, चौथी स्टेज है लेट्स से मेमोरी, एंड लास्ट स्टेज है राइट बैक। तो ये हमारे पास जो स्टेजेस है, सबसे पहले लेट्स से मैंने I1 इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। तो I1 इंस्ट्रक्शन को जैसे मैंने फेच किया, मतलब सबसे पहले मैंने R2 और R3 को इंस्ट्रक्शन को पहले फेच किया, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद ऑपरेंड को यहां पे डिकोड किया, फिर ऑपरेंड को फेच किया, फिर हमने एग्जीक्यूट किया इसको, मतलब जो भी हमें एडिशन सबट्रैक्शन जो भी करना है, और अगर मेमोरी को हमने कोई एक्सेस करना बीच में तो मेमोरी के लिए हमारे पास है, और फाइनली राइट बैक, जो रिजल्ट आया उसको हमने राइट बैक कर दिया, मेमोरी के अंदर दोबारा डाल दिया। अब ऐसे लेट्स से I2 स्टार्ट होगी। I2 कहां से स्टार्ट होगी, पाइपलाइनिंग में हम क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेज जो है वो यहां पे I2 क्या करेगी, यहां पे फेच एंड डिकोड करेगी, फिर ऑपरेंड फेच करेगी यहां पे, फिर एग्जीक्यूट करेगी, और फिर मेमोरी, और फाइनली हमारे पास क्या आता है, राइट बैक। इस तरीके से जो है वो I2 फिर I3 I4 इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यहां पे देखो कि इसका मतलब क्या, R2 प्लस R3, और फाइनली में यहां पे R2 में सेव कर रहे हैं, मतलब R2 में हम राइट कर रहे हैं कुछ, और यहां पे R2 में हम रीड कर रहे हैं। तो I2 में या I1 की अगर बात करें तो I1 इंस्ट्रक्शन में R2 की फाइनल वैल्यू कब प्रिपेयर होगी, फाइनल वैल्यू कब आएगी R2 की, जब एग्जीक्यूट करने के बाद हम मेमोरी के बाद राइट बैक पे पहुंचेंगे। क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, फिर ऑपरेंड को फेच किया, जो भी R2 और R3 के अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको फेच किया, फिर एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, उसके बाद मेमोरी की, और यहां पे मेमोरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम रजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये स्टेज आइडल रहेगी। और जब राइट बैक करेंगे, राइट बैक का मतलब है जो R2 और R3 को ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो हम वापस R2 में राइट कर देंगे, लिख देंगे। तो यानी इस स्टेज के बाद इस पॉइंट पे आपको R2 की फाइनल वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमने क्या किया, I2 इंस्ट्रक्शन को यहां पे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पाइपलाइनिंग में हम क्या करते हैं, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। I2 ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड किया, इस क्लॉक पल्स में इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड किया, तो ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच हो गई, ऑपरेंड को फेच किया। अब ऑपरेंड फेच का मतलब क्या है कि R2 की वैल्यू को फेच कर दिया, यहां पे R2 की वैल्यू को फेच कर लिया, लेकिन क्या यहां पे R2 की वैल्यू आ चुकी है फाइनल, नहीं। R2 की वैल्यू कहां पे आएगी, इस क्लॉक पल्स में आएगी, मतलब ये क्लॉक पल्स 1 है, ये क्लॉक पल्स 2 है, ये क्लॉक 3 है, क्लॉक 4 है, क्लॉक 5। तो क्लॉक 5 के बाद जाके R2 की फाइनल वैल्यू आएगी। लेकिन हमने क्या किया, क्लॉक पल्स 2 पे या 3 पे ही हमने क्या कर दिया, 3 क्लॉक पल्स पे ही हमने रीड कर लिया R2 की वैल्यू, और क्लॉक पल्स 3 पे हमने क्या किया, 4 पे एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया। मतलब अब ये एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, गलत वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रीड आफ्टर राइट। और ये एक्चुअली में डेटा हजार्ड का पार्ट है। तो ये हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा हूं कि डेटा हजार्ड बेसिकली अक्कर होते हैं जब हम डेटा के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हम रीड के बाद राइट करें, या यहां पे अगर बात करें तो राइट यहां पे हो रहा है, उससे पहले हमने यहां पे रीड कर लिया, तो दैट इज व्हाई इट इज अ रीड आफ्टर राइट प्रॉब्लम। ऐसे अगर बात करें स्ट्रक्चरल हजार्ड, स्ट्रक्चरल हजार्ड का मतलब क्या होता है, या कब अक्कर होती है, जब मल्टीपल रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। रिसोर्सेज कौन से, हमारे लेट्स से प्रोसेसर है, मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट मेमोरीज हैं, रैम है, कैश है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक ही टाइम पे क्या कर रही है, एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे हमारे पास जो है स्ट्रक्चर हजार्ड इस वजह से क्रिएट हो रहा है। जैसे इसी में एग्जांपल में बात करें तो देखो यहां पे मेरे पास राइट बैक है और मेमोरी, मतलब लेट्स से कि एक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन यहां पे क्या कर रही है, राइट बैक, मतलब जो फाइनल आउटपुट है उसको हम राइट बैक कर रहे हैं। मैं इसका एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया हमने और उसको हम फाइनल रिजल्ट को राइट बैक कर रहे हैं। तो राइट बैक हम जनरली कहां पे कर रहे हैं, लेट्स से मेमोरी के अंदर, और यहां पे नीचे हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो राइट बैक भी कहां पे कर रहे हो, लेट्स से मेन मेमोरी में, और यहां पे मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर रही है। तो दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन एक ही टाइम पे मेमोरी को, मतलब सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रक्चरल हजार्ड जो है वो अकर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल हजार्ड। कंट्रोल हजार्ड जनरली अकर होता है ब्रांचेस की वजह से, ब्रांच कंडीशंस की वजह से। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में आप लेते हैं, 4 स्टेज पाइपलाइनिंग का ले लेता हूं मैं। इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट। सिंपल हमारे पास 4 स्टेज पाइपलाइनिंग है। इंस्ट्रक्शन को पहले फेच कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, ऑपरेंड फेच, और फाइनली हमने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। लेट्स से हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन I1 है उसकी बात करें तो I1 इंस्ट्रक्शन जो है वो लेट्स से कि एड्रेस नंबर 500 पे, मतलब मेमोरी के अंदर 500 एड्रेस में पड़ी है। तो होता क्या कि जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट अवेलेबल इंस्ट्रक्शन के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहां पे क्या होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी 501 ऑटोमेटिकली, मतलब हमने रियल इंस्ट्रक्शन को फेच किया, यहां पे इंस्ट्रक्शन आ गई, वो भी एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन 501 पे ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर आ गया। अब यहां पे हमने क्या किया, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में जैसे ये पहले यहां पे हुई, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स में हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन फेच कर दी, कौन सी 501 में जो पड़ी थी। तो 501 वाली इंस्ट्रक्शन फेच किया, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, ऑपरेंड को फेच किया, और लेट्स से हम यहां पे क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ध्यान से देखना, I1 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई। I1 यहां पे इंस्ट्रक्शन को हमने यहां पे फेच किया, मतलब इस क्लॉक पल्स में हमने उसको फेच किया, सेकंड क्लॉक पल्स में डिकोड, थर्ड क्लॉक पल्स में ऑपरेंड फेच, फोर्थ में हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहां पे सेकंड क्लॉक पल्स में हमने सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, लेट्स से थर्ड को भी फेच कर लिया, 502 में जो पड़ी थी उसको भी मैंने फेच कर लिया, उसको मैं डिकोडिंग पे लगा देता हूं। लेट्स से उसको मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेंड को फेच कर रहा हूं, और उसको भी आगे जाके लेट्स से एग्जीक्यूट करेंगे। जस्ट सिंपली मैं यहां पे लिख रहा हूं, मतलब मैंने थर्ड क्लॉक पल्स पे तीसरी इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर लिया। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या किया, फोर्थ को भी फेच कर लिया। लेकिन यहां पे एग्जीक्यूट देखो, यहां पे फोर्थ क्लॉक पल्स में एग्जीक्यूट होगी, और लेट्स से कि एग्जीक्यूट होने के बाद ये एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन थी और इसने एड्रेस दे दिया 700, मतलब आपको जो 700 एड्रेस में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन आप तो एक एक करके नेक्स्ट करते जा रहे हो। तो इस केस में होगा क्या, इस सारे को आपको फ्लश करना पड़ेगा, मतलब पूरी की पूरी जो वैल्यूज है ये आपकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, जो 700 लोकेशन में पड़ी है। तो ये एक्चुअली किसका पार्ट है, कंट्रोल हजार्ड का, जो जनरली ब्रांच कंडीशंस की वजह से अकर होती है। थैंक यू।
processing unit. In this video, we shall see multiple bus organization. So previously we have seen the single bus organization. In this topic, I'll be explaining about multiple bus organization. So we used the simple single bus structure that was shown before in the previous video, that is figure number 7.1 from the textbook, to illustrate the basic ideas. Okay, so the resulting control sequences that were shown in the figure 7.6 and 7.7, which is nothing but execution of a complete instruction and execution of branch instructions. Those are quite long because only one data item can be transferred over the bus in a single clock cycle. Okay, so there was only one data transfer happening in one clock cycle. So that's the reason they were quite long. Okay, so in order to reduce the number of steps needed, the most Let us take a look at a multiple bus organization. So here, as you can see, there are 3 buses over here which are within the processor chip. There is a register file over here which has 2 output ports. That means 2 registers can be accessed simultaneously and their contents can be placed on bus A and bus B. There is another port over here which allows the data on bus C to be loaded into a third register, and this can be done in the same clock cycle. Buses A and B, they transfer source operands to A and B inputs of the ALU. R is equal to A, this R equal to A or equal to B, this is the control signal which decides which of the input has to be transferred to bus C. There is an incrementer unit over here which increments the contents of the program counter and passes them back to the program counter to point to the next instruction. However, there is another constant value which is available at the input of the multiplexer, and this constant value can be used to increment other memory addresses. Like for example, if we have a load instruction and it is accessing multiple data elements in an array, so to point to successive memory locations, this constant value can be used. Let us take an example and see how this multiple bus organization can be used to execute an instruction add R4, R5, R6. So in the first step, the contents of the program counter will be put onto bus B, from where they will be available at the input of the ALU. R is equal to B will select this input and pass it on to the memory address register through bus C. The memory read operation will be initiated. At the same time, this program counter value will be sent to the incrementer unit, where it will be incremented and put back into the program counter. It will point to the next instruction. In step 2, the wait for memory function complete signal, if it is received, the data from the memory will be put into the memory data register. This is the instruction that has been fetched from the memory. This again will be put onto bus 3 in the next clock cycle, where it will be again available at the B input of the ALU. Through the ALU again it will be sent to the instruction register. So now the instruction register is having the instruction which has been fetched, and it will be passed on to the instruction decoder. In the next clock cycle, the source operands R5 and R6 will be accessed from the register 5. So suppose if this is
bus A is carrying R5 contents and bus B is carrying R6 contents. So R6 will be available at the input port of the ALU over here, and R5 will be available at the input of the multiplexer. The multiplexer control signals will allow the contents of R5 to be available at input port A. The add operation to the ALU will result in the addition, and the result will be passed on back to the register R4 through bus C. Right after the instruction is very difficult to understand a dynamic pipeline system. But let us understand static pipeline. The term static pipeline. Hello friends, welcome to Hello everyone, in this video we'll be studying about instruction pipelining. Now as we all know that pipelining is nothing but a process of arrangement of different and delegate the instructions. Otherwise pipeline stalls may occur. Okay, so let us see one example. Over here, if you look, so this is achieved set of instruction execution units. So now what happens in a superscalar architecture? So over here if you see this definition. So superscalar architecture is a type of microprocessor design and a construction that makes it possible for a processor to work on multiple sets of instruction at the same time by sending them through separate execution units. So it is like something related to the pipeline thing, which that's why I have taken the pipeline topic, the revision of the pipeline topic. So over here in superscalar architecture, what will happen? It is a construction in such a way that multiple sets of instructions can be executed in separate execution units at the same time. Each unit can still handle only one set of instruction and order at a time. However, it is possible to have multiple units also. So it is not like that only multiple units will run concurrently. Single set of instructions can also operate in the same manner. In a superscalar architecture, so over here the definition is, it is a method of parallel computing used by many processors. In a superscalar computer, the CPU manages multiple instruction pipelines to execute several instructions which are occurring concurrently during a clock cycle. So this is achieved by feeding the different pipelines to a number of execution units. To successfully implement the superscalar architecture, the CPU's instruction fetch mechanism must intelligently retrieve and delegate the instructions. Otherwise, pipeline stalls may occur. Okay, so let us see one example. Over here, if you look over here, instruction, it's a 5-stage pipeline, instruction fetch, decode, execute, memory access, and write back. So over here, if you see, this is instruction number 1, and at the same time, instruction number 2 will also be executed.
Okay, so two instruction fetches over here, two instruction fetches over here, similarly over here and over here. So what happens in the superscalar architecture? Two instructions have been fetched at the same time. Over here at this particular stage, if you see, two instructions have been decoded. Instruction number 1 and 2 is decoded, 3 and 4 is fetched. Over here, if you see, instruction 1 and 2 is been executed at the same time. At the same time, 3 and 4 are decoded, and at the same time 5 and 6 are fetched. So just in order to visualize an example I'm giving of how this exactly works. So consider a hospital, a surgical department that consists of areas like it has a surgery, it has a department of surgery, it has a department where all the recovered patients will be coming for the guidance. One, there will be a department where the new patients will be admitted. So patients can move in only one direction, from admitted to recovery. That is, first the patient will get admitted to the hospital, then he'll be having a surgery, and then he'll be going into the recovery stage. And it takes the same amount of time to go through each of the areas. So assume the admitting area can handle only 3 patients at a time, and there are 3 surgical teams, each of which can work on a single patient. Also assume the recovery area has an intermediate number of beds, but can accommodate only 1 person per bed. When the unit is working correctly, the admitting process 3 patients at a time, sends each one, even though the surgical teams can handle only 1 patient at a time, because there are 3 of them, they will have to pass their charges on by the time the new ones arrive. The path of the 3 patients are taking to the instructions following through the 3 pipelines in CPU clock cycle. The admitting area is something like a fetching mechanism. So over here, the fetching mechanism is something like when a patient is being admitted. The surgery team over here is like the execution unit. So they are going to execute something on the newly admitted patients. And the recovery room is like the write back results or the memory access, where the registers are to be returned back. So to illustrate this kind of problem that can occur in a superscalar architecture, consider what would happen. Hello everyone, in this video we'll be studying about instruction pipelining. Now, as we all know that pipelining is nothing but a process of arrangement of different hardware elements of the CPU in such a way that its overall performance is increased. So simultaneous execution of more than one instruction takes place in a pipeline. Hello everyone, in this video we'll be studying about instruction pipelining. Now, as we all know that pipelining is nothing but a process of arrangement of different hardware elements of the CPU in such a way that its overall performance is increased. So simultaneous execution of more than one instruction takes in such a way of what happens in instruction fetch. So in the instruction fetch phase, Now let's see about control memory. Generally, computer mainly contains 3 components. Any computer mainly contains 3 components. The first component is CPU. The second component is I/O devices. Third component is memory. So these are the 3 major components which are present in the computer. If you take CPU, CPU again contains 3. Then it is not possible to perform any modifications on the sequencing. So this is nothing but address sequencing only. The next address generator is also called. Through the memory. That's why we are going to know for. Let us talk about micro programmed control unit.
So generally in microprogrammed control unit, we will be writing some code, I can say. Okay, it's not a circuit. So I can say that we will be storing the control signals in a memory. Remember it. It's all about control signals. Finally, you remember one thing: control unit should generate control signals for for making your circuits work, right? Control signals. Microprogrammed control is a 5-stage. Each control word, whatever and their bit, that kind. Microprogrammed control is an alternate to generating control signals by hardware. So in hardware, the signals were being generated by interpreting the contents from the instruction register and the timing signals from the step counter. But this microprogrammed control is a software approach. Here the signals are generated in each. Microprogrammed control is an alternate to generating control signals by hardware. So in hardware, the signals were being generated by interpreting the contents from the instruction register and the timing signals from the step counter. But this microprogrammed control is a software approach. Here the signals are generated in each step, which is determined by a program which is stored in a special by hardware. So in hardware, the signals were being generated by interpreting. Microprogrammed control is an alternate to generating control signals by hardware. So in hardware, the signals were being generated by interpreting the contents from the instruction register and the timing signals from the step counter. But this microprogrammed control is a software approach. Here the signals are generated in each step, which is determined by a program which is stored in a special memory. So this control program is known as the microprogram. And the memory on which it is stored, it is on the processor chip, and it is known as the control store. And control word this is another terminology which tells you that it is a word whose individual bits represent the control signals for each step in the sequence. We will go more into detail of this where it will be easier for you to understand. And the sequence of control words corresponding to the control sequence for a machine instruction. So this is called micro routine. And in the micro routine, the individual control words are referred to as micro instructions. And all the micro routines for various machine instructions are stored onto the control store. Let us take a look at individual control words are referred to as micro instructions. And all the micro routines for various machine instructions are stored onto the control store. Let us take a look at an example. Suppose I have some instruction, say I1, which corresponds to say add, register, register, register. And this, if I'm talking about a 5-stage organization, so this is having 5 stages, where in each step, certain control signals are required. So in T1 stage, some control signals would be required. In T2 stage, some control signals would be required, and so on. So if it is a 5-stage organization, I would be having 5 stages, and in each stage, certain control signals will be required. So for this execution of this machine instruction, this set of micro instructions will be stored in the control store. And each control word, so if suppose there were these many control signals, so the control word is like this. So this is the control word, and each bit is representing one control signal. So like this bit is representing PC in. That means whenever PC in is enabled, the system is able to write in contents into the program counter. So if it is 0, that means it is disabled. PC out is enabled, that means the program counter can be read. Similarly, if you see over here, we have MAR in, read, MDR out. So these are the enabling signals for the individual registers. There is a select for the multiplexer, an add signal, which is for the ALU. ZIN and Z out are the enabling signals for the Z register of the ALU output, and so on. This is the WMFC, wait for MFC signal. This is the end signal, and so on.
So if there were 5 stages, we would be having 5 micro instructions over here. As you can see, there are 7 micro instructions where in this particular implementation, 7 steps are being required for this particular instruction. That is the hardware implementation. Each control word over here, as you can see, each bit is representing a control signal. So this over here, each control word over here is called the micro instruction. And this whole set of micro instructions for a particular instruction, this is called the micro routine. And this micro routine is stored in the control store, which is a special memory. So all the micro routines for all the machine instructions will be stored in the control store. So here is the instruction register where a particular instruction will be, when it is fetched, it will be put in this instruction register. Depending upon what is the instruction, the starting address will be generated. This starting address will correspond to the address of the micro routine for this particular instruction. So if it is an add instruction, whatever was the starting address of the micro routine of the add instruction, that will be generated. It will point to that address in the control store. So suppose if this is the control store where all the micro routines are loaded. So suppose this was the micro routine for some instruction 1, this was the micro routine for some instruction 2, and so on. So this will generate the starting address of that particular micro routine. Just the way we have a program counter which always points to the next instruction, we will have a micro program counter to correspond to the micro instructions. So whatever is the address of the micro routine, that will be loaded in the micro program counter. This will also have inputs from the clock. So each micro instruction will be will be pointed to from the control store. That particular control word will be taken out, and depending upon that control word, whatever bits are high, those particular control signals will be generated. As soon as one control word has been executed or taken out, micro program counter will be incremented by 1 to point to the next micro instruction. Once this is complete, once this micro routine is complete, that means that instruction, that particular machine instruction has completed its execution, and the next instruction fetch cycle will begin, and the next instruction will be brought into the instruction register. So if we have 1 bit for each control signal, this would require a very large control word. And that is called a horizontal organization, where each control signal has a bit. It is seen that many of the signals are mutually exclusive. That means in one particular clock or in one particular stage of the sequence, one of those control signal would be high. Like for an example, the ALU functions. In any given time in stage 4 or in any particular step, only one of the ALU operation would be set to high. So if the ALU operations were 16 in number and we were using 4 bits, we can use 4 bits to identify them. So add can be represented by 0000, sub can be represented by 0001, because at any given point, only one of the control signal will be sent to the ALU. Had this been a complete horizontal organization, each bit, that kind of a micro instruction or that kind of a scheme memory data register bits, minimally encoded scheme in with signals, so that the size of the control word is decreased. So if we have a minimally encoded scheme in which each control signal has its own bit, that kind of a micro instruction or that kind of a scheme is called a horizontal organization. So each control signal will have its own bit. So suppose there were 20 signals which were control signals which are required in a particular implementation. So then in a horizontal organization, this will be the control word would be of 20 bits. Each bit would have its own, each control signal would have its own bit. And so higher operation